Hello, and a very good evening to all of you. My name is Ankit Sharma. I am a PhD scholar at Gujarat University and I am doing research on non-performing assets. And I'm going to be a faculty for this session, which is a demo session from this course at CollegeDekho, which is called Company Accounts. I take sessions for this course, and in this entire subject, we have chosen one topic for this demo session, which is issue, forfeiture, and issue of shares. सो लास्ट वीक हमने इस टॉपिक का एक पार्ट कवर किया था एंड इस वीक में हम लोग एक पार्ट कवर करने वाले हैं एंड देन henceforth we will be taking this topic only, but we'll see how much we are able to cover, and then we'll finish this topic off in these demo sessions itself. All right. So this demo session is to give you a little insight, right? To give you a little perspective into of how these classes are conducted at CollegeDekho. एक 1 hour के sessions conduct किए जाते हैं twice in a week, and after the end of each session you get PDF notes and assignments, right, to clear your understanding about the topic, right? So in this demo session, in this particular demo session, we are talking about company accounts, right? So let us start with the topic for today. So the name of the topic, as we discussed, is company accounts, right? And in this subject, the topic for today is forfeiture and reissue of shares. As discussed, we have already covered a part of this subject, a part of this topic earlier on in the previous week, and from this week onwards, we are covering the rest of this topic. Right? So this is what we discussed in the previous session. We discussed what share capital is. We discussed what a share, just one unit of share is, right? And then we discussed the categories of share capital, what is authorized share capital, or issued share capital, subscribed, called up, or paid up share capital, right? Right. I'm so sorry, excuse me just for a minute. I'm so sorry about that. We were talking about the categories of share capital, and that we discussed all of this in the previous session. So we started with the authorized share capital, कि कंपनी को रजिस्टर करने के टाइम पे कंपनी ने कितने मैक्सिमम शेयर कैपिटल को ऑथराइज करवाया है, किससे? कंपनीज एक्ट से, राइट? सो किसी भी कंपनी को रजिस्टर करते टाइम एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट होता है, उसमें कैपिटल क्लॉज लगा होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, राइट? और उस कैपिटल क्लॉज में कोई भी कंपनी अपना मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम लिमिट ऑथराइज करवाता है कंपनीज एक्ट से, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, राइट? तो वो मैक्सिमम लिमिट, और इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, राइट? लेट अस से कि किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस का कैपिटल ऑथराइज करवाया हुआ है, दैट दे कैन इशू कैपिटल अप टू 1 crore rupees, right? So that becomes the authorized share capital for that company. And out of that 1 crore rupees, how much capital has the company actually issued? Right? That becomes the issued share capital. Let us say that this is 80 lakhs, that out of 1 crore rupees, the company has decided to issue just 80 lakh rupees, and they have left this 20 lakh rupees for later use, right? कि वो बाद में इशू करेंगे उसको. तो अभी जो 80 लाख इशू किया, आउट ऑफ दैट 80 लाख रुपीज पब्लिक ने एक्चुअली कितने के लिए सब्सक्राइब किया है? कि कंपनी ने ऑफर तो कर दिया 80 लाख रुपीज का कैपिटल, लेकिन कंपनी ने जो ऑफर किया उसमें से पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? तो पब्लिक ने जितने के लिए सब्सक्राइब किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, राइट? द फर्स्ट वन. And out of this subscribed share capital, let us say that the per unit value of a share is 100 rupees. Right? Out of that 100 rupees per unit,
कंपनी ने कितनी अमाउंट कॉल की है, कि एक शेयर की वैल्यू तो है 100 रुपीज, लेकिन कंपनी पहले दिन पे ही तो 100 रुपये पूरे नहीं मांग लेगी, है ना। वो कॉल्स में रुपए मांगे जाते हैं कि फर्स्ट कॉल में आप हमें लेटेस्ट से 20 रुपीज दे दीजिए, सेकेंड कॉल में आप हमें 30 रुपीज दे दीजिए, लाइक दैट। सो आउट ऑफ दैट 100 रुपीज कंपनी ने कितने रुपए कॉल किए हैं। कॉल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड। हाउ मच amount per share has the company called, that is the called up capital. So if a share is of, let us say, 100 rupees, and out of 100 rupees the company has called for 50 rupees, so that 50 rupees per share multiplied by the number of shares, that becomes a called up capital. And what about the rest of the 50 rupees? That becomes your uncalled capital. वो रुपए अभी तक मांगे नहीं है कंपनी ने, ठीक। देन द पेड अप शेयर कैपिटल, कि 50 रुपए पर शेयर कंपनी ने तो मांग लिए, लेकिन 50 रुपए में से पब्लिक ने कितने रुपए दिए। हर कोई तो 50 रुपीज अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट। सो पर यूनिट सुनने में 50 रुपीज साउंड्स लाइक अ वेरी लेस अमाउंट, बट लेटेस्ट से किसी के पास अगर 10,000 शेयर्स हैं एंड 50 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10,000 शेयर्स बिकम्स 5 लाख रुपीज, राइट। सो ये पर शेयर सुनने में बहुत छोटी अमाउंट लगती है, बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट। सो 50 रुपीज कंपनी ने मांगे, लेकिन हर कोई तो पर शेयर इतने रुपए नहीं दे पाएगा, राइट। तो वो आउट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पब्लिक ने एक्चुअली कितने रुपए दिए हैं, दैट इज योर पेड अप शेयर कैपिटल, राइट। और वही जो बात हुई हमारी कि हर कोई 50 रुपीज नहीं दे पाएगा, तो अगर किसी ने कम रुपए दिए हैं, लेट से किसी ने 30 रुपीज दिए हैं या 40 रुपीज पर शेयर दिए हैं, तो जो बीच का डिफरेंस हुआ 40 और 50 में, जो 40 रुपए उसने पे किए और जो 50 रुपए कंपनी ने कॉल किए थे, बीच का 10 रुपीज जो गैप हुआ, दैट इज योर कॉल्स एंड अरियर्स, राइट। और दी अनपेड कॉल्स, मतलब पब्लिक ने, कंपनी ने रुपए मांग लिए लेकिन पब्लिक रुपए नहीं दे पाई, द शेयर होल्डर कुड नॉट पे दैट मच, राइट। एंड देयर वुड आल्सो बी अ केस जहां किसी शेयर होल्डर ने ज्यादा रुपए दे दिए होंगे, कंपनी ने कॉल किए 50 रुपीज, बट शेयर होल्डर ने दिए 60 और 70 रुपीज पर शेयर, तो वहां पे भी जो गैप है बिटवीन 50 एंड वट एवर द अमाउंट द शेयर होल्डर हैज पेड, that amount of 10 rupees or 15 rupees or 20 rupees, that amount is the calls in advance amount, right? कि शेयर होल्डर ने एडवांस में रुपए दे दिए, right? So these are all the concepts that we discussed in the previous session. And then there is this example which is based on the theory that we learned until now, right? So let us go through this quickly. A company had an authorized capital of 10 lakh rupees, right? This is the maximum limit that the company can issue shares of, कि वो कंपनी 10 लाख तक के वैल्यू के शेयर्स इशू कर सकती है। सो कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख, which is divided into 1 lakh equity shares of 10 rupees each, right? It decided to issue 60,000 shares for subscription, right? अभी तक दो अमाउंट हमारे पास फाइनल हुई। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल which is 10 lakh rupees divided into 1 lakh equity shares multiplied by 10, right? ये हो गया हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड में से क्या निकल के आता है, ऑथराइज्ड की कंपनी ने या ऑथराइज तो करवाया, लेकिन एक्चुअली में इशू कितना किया है, राइट। सो आफ्टर ऑथराइज्ड कैपिटल व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, इशूड कैपिटल। सो इशू कितना किया है, इशू किया है 60,000 शेयर ऑफ हाउ मच पर यूनिट, 10 rupees per unit, right? What is the total amount here, 60,000 multiplied by 10 rupees per unit, right? What is the issued share capital, 6 lakh rupees, right? So we have authorized share capital of 10 lakhs, we have issued capital 6 lakhs. Now let us go ahead with the question. And received applications for 70,000 shares, right? कि कंपनी ने ऑफर तो किए 6 लाख रुपीस के शेयर्स, बट उनको ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया उन शेयर्स का,
एज एन उन शेयर्स की डिमांड इतनी थी कि ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया उन शेयर्स के लिए, राइट. If I have to give you an example of a relevant case like this, जोमेटो ने आईपीओ इशू किया था अपना कुछ टाइम पहले, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट. तो उनके शेयर्स की डिमांड इतनी थी दैट देयर वाज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ देयर शेयर्स. उन्होंने फॉर एग्जांपल लेट अस से कि उन्होंने 50 लाख का शेयर्स ऑफर किए थे पब्लिक को, बट पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया या रुपए दिए 60 लाख शेयर्स, राइट. 60 लाख अमाउंट के लिए. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जितना कंपनी ने ऑफर किया था उससे ज्यादा के उन्हें रुपए मिल गए. तो इन ओवर सब्सक्रिप्शन केसेस में देयर आर टू पॉसिबल चांसेस, देयर आर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, राइट. फर्स्ट वन इज कि एक प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, राइट. वी विल अंडरस्टैंड प्रोराटा अलॉटमेंट व्हेन वी गो अहेड विद दिस टॉपिक. एंड द सेकंड ऑप्शन इज वेरी सिंपल. इट सेज कि अगर आपने इस एग्जाम्पल का अगर हम इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 6 लाख रुपीज के शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और मिले हैं 7 लाख रुपीज का सब्सक्रिप्शन, राइट, जो पब्लिक ने अप्लाई किया है, राइट. तो अगर सेकंड सॉल्यूशन में इसकी हम बात करें तो क्या बोलती है, क्या कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप 6 लाख रुपीज का जो शेयर कैपिटल है उसके रुपए आप अपने पास रखिए और जितना भी एक्स्ट्रा है वो आप पब्लिक को वापस दे दीजिए, राइट. टू रिटर्न बैक द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड, राइट. सो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट इज इफ इट इज प्रोराटा अलॉटमेंट या फिर रुपए वापस दे दिए. यहाँ पे क्या हुआ है, इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन, मतलब जो एक्स्ट्रा रुपए आए थे पब्लिक को वापस दे दिए, राइट. Then up to 31st March 2020, it has demanded or called 9 rupees per share. 10 rupees का शेयर था और 9 rupees की कॉल हो गई है. तो what is the uncalled amount here? 10 minus the called amount of 9. The uncalled amount per share is 1 rupee. Okay. Then what does it say? All shareholders have duly paid the amount called. मतलब जो 9 रुपए पर शेयर की जो अमाउंट कॉल हुई थी वो हर किसी ने पे की है एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु हैज पेड ओनली 7 रुपीज पर शेयर. टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑथराइज. हम लोग वापस से टॉप से नीचे आएंगे. सो 1 लाख टोटल इक्विटी शेयर है. आउट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर, हम लोग अमाउंट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इक्विटी शेयर की बात कर रहे. सो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑथराइज थे. 1 लाख में से ऑफर कितने किए, इशू कितने किए कंपनी ने, 60,000, राइट. सब्सक्रिप्शन आया 70 का, लेकिन को रिजेक्ट करके 60,000 शेयर्स को ही सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया गया, राइट. आउट ऑफ दो 60,000 शेयर्स कॉल दिया 9 रुपीज पर शेयर. सो आउट ऑफ दीज 60,000 शेयर्स 55,000 शेयर्स पे फुल 9 रुपीज हमें मिल चुके हैं और जो बाकी 5,000 शेयर्स हैं उस पे सिर्फ 7 रुपीज मिले हैं, मतलब 2 रुपए कम मिले हैं, राइट. और ऐसे केसेस जहाँ पे कॉल की हुई होती है ज्यादा रुपए की, हमें रिसीव होते हैं कम रुपए, राइट. ऐसे केसेस में जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट होती है उसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर, राइट. लास्ट में हमारी बात हुई थी इसके बारे में. So here also the called up amount is 9 rupee per share, right? And what is the amount that the shareholder has paid? 7 rupee. So what is the difference here? 2 rupee per share. So 2 rupee per share is the calls and arrears amount. And if you have to write the amount, पूरा का पूरा amount अगर लिखना है तो 9 minus 7, 2 rupee per share multiplied by the number of shares that the shareholder is holding, which is 5,000. So 5,000 multiplied by 2, 10,000 is your cost and arrears amount, right. So this is the example, and what is it that they are asking? Prepare a balance sheet assuming there are no other details, right. So पूरी balance sheet में हमें ये पूरा डेटा मिला है. So अगर हम ये देखें
balance sheet. This is the official balance sheet format according to Schedule 3 of the Companies Act 2013. This is the new balance sheet format. Right? This has been taken from ICI, source is ICI. Anyways, in the entire balance sheet, ये लोग हमें बोल रहे हैं prepare a balance sheet assuming there are no other details. So हम बाकी सब डिटेल्स को इग्नोर करके सिर्फ उसी पार्ट को दिखाएं बैलेंस शीट में जो इस क्वेश्चन में दिया है. तो क्या क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में? They have told us details about the share capital, right? So we have to write this down. So this is the equity and liabilities part, right? What about the assets part? So assets में हमें डेटा मिला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, राइट? बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कैसे ना कैसे तो रिसीव होगा, या तो कैश में या तो बैंक में, राइट? सो वी हैव टू show these two items, share capital and cash and cash equivalents in the balance sheet, right? Let us see how that has been done. This is a balance sheet. They have written these different items. Share capital लिख दिया है, equity and liabilities. First item is shareholders funds, right? This is the official format, equity and liabilities. And first balance sheet item is shareholders funds और उसके अंदर share capital, right? So that is what has been shown in the answer as well. Equity and liabilities, shareholders funds, and then share capital. So share capital की amount 5,30,000. But how is it 5,30,000? This has been shown in a note number 1. Right, we will come to it later. But for now, this is the note that is attached to share capital, and then और कुछ item तो दिया नहीं है हमें, है ना? All of this has not been provided to us in the question. We will ignore all this, and then we will directly write the total of equity and liabilities. Yes, again 5,30,000 because no other item has been given to us. Right, now let us talk about the assets part. Assets में हम किसी की भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, राइट? हमें डायरेक्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेटा मिला. So we will write just that. Current assets, cash and cash equivalents, 5,30,000, and then again there is a note attached to it, right? And then again there is no other additional information about the other items of assets, right? And again तो हम सिर्फ total लिखेंगे, which is again 5,30,000. Now let us look at these notes that are attached. ये 5,30,000 वैल्यू तो है, लेकिन ये आई कैसे? एक बार देख लेते हैं. Right, so this is a note to accounts, and we will look at first of all note number 1, so which is related to share capital. Right? Share capital, there is no data related to preference share capital, right? So we just have to mention data related to equity share capital. Right? Equity share capital means the start of any information, right, in the notes to accounts that is related to share capital. हमें हमेशा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से शुरुआत करनी है इसकी, राइट? बिकॉज अगेन इफ यू लुक एट द ऑफिशियल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज द नोट दैट इज अटैच्ड टू इट, राइट? शेयर कैपिटल एंड देन नोट नंबर 8, राइट? लेट अस लुक एट व्हाट इट सेज. सो द ऑफिशियल फॉर्मेट आस्क्स अस टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज different items related to share capital. What is the first one? The number and amount of shares authorized, right? So the official format itself asks us to start from the authorized share capital, right? After authorized comes the issued, subscribed, and paid up capital, right? The par value per share, right? So all in all of the information that is related to share capital has to be disclosed, right? So again, we will start in the equity share capital. We will begin with the authorized share capital, right? Which is how much? We know that 1 lakh equity shares have been authorized, and that the face value is 10 rupees. And so what is the total value of authorized share capital? 10 lakh rupees. After authorized capital is the next item, the issued share capital. कि ऑथराइज तो करवा लिया है 10 लाख रुपए का कैपिटल, लेकिन एक्चुअली में कंपनी ने कितना इशू किया है?
कंपनी ने कितना ऑफर किया शेयर होल्डर्स को, right? So authorized share capital 10 lakhs. Then the issued share capital, we know that only 60,000 shares being offered to the public, right? So again 60,000 shares multiplied by 10 rupees each, and the amount is 6 lakhs. Right? So we have talked about authorized, issued, and then what is the next one? कि ऑफर तो कर दिया है 60,000 शेयर, लेकिन एक्चुअली में पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया है? तो हमारे सम में हमने देखा कि 70,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है. वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स. It says in the sum that 60,000 शेयर्स को अलॉटमेंट मिली है and 10,000 को रिजेक्ट कर दिया है. We have rejected the remaining application. Only 60,000 shares ko. So we will show just that. Subscribed share capital, 60,000 shares have been allotted and subscribed, and at the value of 10 rupees each. So the value is 6 lakhs again. So what is the last item here? कि सब्सक्राइब तो कर लिया पब्लिक ने, लेकिन जब उन्होंने रुपए मांगे पब्लिक से तब उन्होंने एक्चुअली में कितने रुपए दिए? Right? So we read in the sum that until 31st March 2020, the company has demanded or called 9 rupees per share. Out of the 10 rupees each per share, out of 10 rupees per share, 9 rupees per share has been called. Right? 10 रुपए में से 9 रुपए पर शेयर मांग लिए गए हैं. कंपनी ने कॉल कर लिया 9 रुपए के लिए. राइट? तो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? कॉल्ड अप कैपिटल होगा, अगेन 60,000 शेयर सब्सक्राइब किए तो 60,000 की कॉल होगी, है ना? तो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 rupees each, ₹9 कॉल्ड अप. राइट? 9 कॉल करने के बाद 60,000 शेयर पे 9 कॉल करेंगे, 5,40,000 अमाउंट होगा. राइट? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 5,40,000. देन कम, सो दिस वाज द कॉल्ड अप पार्ट, कम्स द पेड अप पार्ट. कि इतना कॉल किया 60,000 पे 9 रुपीज हमने कॉल किया, 5,40,000, लेकिन पेड अप कितना है? राइट? कि पब्लिक ने कितने के लिए पे कर दिया है. तो हमें सब में बताया कि हर किसी ने रुपए दे दिए. All shareholders have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 rupees per share. Right? तो सबके रुपए आ गए हैं except this one shareholder. उसने कितने रुपए नहीं दिए? कितने रुपए दिए? 7 rupees per share दिए. कॉल कितने की थी? 9 रुपए की थी. तो कितने रुपए इस शेयर होल्डर ने नहीं दिए? 9 minus 7, 2 rupees per share कम मिले हैं. Right? So the shareholder has paid 2 rupees less than the called up amount on each share. Right? So 2 rupees per share multiplied by how many shares the shareholder hold? 5,000. Right? 5,000 multiplied by 2 rupees, which is 10,000 rupees. Right? So इस shareholder ने 10,000 rupees कम पे किए. और जब भी कम रुपए हमें मिलते हैं तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स. राइट? अगर इस शेयर होल्डर ने 9 रुपए की कॉल पे 10 रुपए दे दिए होते तो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा आया है हम लोग उसको कॉल्स इन एडवांस में लेते हैं. बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव रिसीव्ड 2 rupees लेस देन द कॉल्ड अमाउंट. राइट? सो 2 rupees less that we have received, that would be multiplied by the total number of shares that the shareholder holds, which is 5,000. So 5,000 multiplied by 2 rupees, 10,000 is a false in arrears amount. Right? And how is it represented in the balance sheet? Right. That on 60,000 rupees, 9 rupees was called up, 5,40,000 is the total. And then out of these 60,000, calls unpaid or calls in arrears on 5,000 shares at 2 rupees per share, which is 10,000, and it will be deducted, and the final amount is 5,30,000, which comes in the outer column. Right? So this 5,30,000 is the end of note 1,
and then this is also the amount that is represented in the notes to accounts share capital is note number 1. Right? And since there is no other item on the balance sheet on the equity and liabilities part, तो उसका वहीं पे total कर दिया गया है, which is also the same 5,30,000. Right? Now let us talk about the second note, cash equivalent. Right? So in the second note, there is no description like this. Right? ये जो first note में description दिया है कि authorized इतना है, issued इतना है, subscribed इतना है. Right? So all of this deserved an explanation. क्योंकि काफी बड़ा नोट है, तो इसमें जो यहाँ पे नोट दिया गया, नोट नंबर 1, वो समझ में आ रहा है. Right? बट नोट 2 में तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना डिस्क्रिप्शन की कुछ जरूरत नहीं. राइट? तो इसमें नोट नंबर 2 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के सामने नोट लिखने की क्या जरूरत थी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की जो अमाउंट है 5 लाख थी, सीधा सीधा क्यों नहीं लिखी? इसमें क्यों यहाँ पे नोट दिया हुआ है सिर्फ एक लाइन के लिए? टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या है. Do again refer to the official format, balance sheet format. So in the official format, cash and cash equivalents जो है, उसके लिए जो notes to accounts attached है, that is note number M. Right? Let us have a look at it. Right? Cash and cash equivalents. Right? So what all is included in the cash and cash equivalents balance sheet item? It could be bank balance. Right? It could be a check. It could be a demand draft. It could be cash in hand, the physical cash currency, or it could be any other cash and cash equivalent asset. Right? So out of all of these different assets, how will we know that this cash and cash equivalents की जो amount है, how will we know कि ये 5,30,000, is it in the form of cash, is it in the form of bank balance, is it in the form of a check or a demand draft or any other current asset? How will we know that? Right? So to make that part clear, right? To make it clear कि हम किस फॉर्म में ये 5,30,000 को होल्ड कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे ये नोट दिया गया है, which is just a one line item, but then again it makes it clear that the balance of 5,30,000 is in the form of a bank balance. Right? Balances with banks, the amount is 5,30,000. Right? So out of all of these different cash and cash equivalent items, that 5,30,000 is in the form of a bank balance. Right? So again, go back to the format, 5,30,000, and since there is no other item related to assets, we quickly make a total of 5,30,000, and the liabilities and equity are matching with the assets. So that is your balance sheet format as far as this question is concerned. Right? Okay. Let us read this note as well. It is clear from above that details of authorized, issued and subscribed capital are given in the notes to account but are not counted. Right? आप देखिए यहाँ पे हर आइटम के बाद एक लाइन है. So which means that उसको टोटल में इंक्लूड नहीं किया गया है. It has been written just as an additional information for the shareholders. Right? It is only the paid up capital, this part is only the paid up capital, that is a portion of the issued capital subscribed by shareholders, which is taken into account while totaling the liability side of the balance sheet. Right? ये हमने जो अलग अलग इंफॉर्मेशन की, आउट ऑफ ऑल दिस अमाउंट सिर्फ ये जो पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट है, only that is included in the total part. Right? This is what the note says, and this is also what we learned while we were looking at this answer. Okay. So I think we have come to the end of the session. Yes. So anyways, this was just a demo session to make you understand at how these different sessions are conducted at CollegeDekho, और हर सेशन में हर टॉपिक के पीछे कितना डिटेल में जाया जाता है. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हर सेशन के बाद कुछ पीडीएफ नोट्स रहते हैं, कुछ असाइनमेंट्स रहते हैं, पीपीटी हो सकती है, जस्ट लाइक दिस. राइट?
So this was it for this demo session, but I hope to see you in these 1 hour sessions sometime, which is a part of our regular subject, regular course, right? And I hope you had a happy learning, and thank you so much for